Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesa Sunyavare Paskacharya Satarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. What is our time frame? Less. We'll do a little less. We are here today to honor the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And we can talk a little bit Gaura Leela. But the real fruit of this conversation today is not that we just walk out with some pretty pictures in our head. Srila Prabhupada said that this message is meant to cause a revolution within the heart. तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारे हृदय में ये जो कृष्ण का जो चर्चा है उनका आंदोलन या विप्लव को सृष्टि करना है. Tamal Krishna Maharaj, one of the heroes of the early days in ISKCON, महाराज जो ISKCON की शुरुआत के समय के प्रकार के नायक हुआ करते थे. I was standing with him one time. We were on the campus of a university. हम एक साथ उनके साथ खड़े थे एक यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के प्रांगण में थे. And one big Sanskrit professor came up to us. एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हमारे पास आए. Now he had studied at the University of Chicago. वो शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए थे. One of the best Sanskrit schools in the world. तो शिकागो यूनिवर्सिटी जो है जो संस्कृत के विद्यालयों में सबसे वो विश्व में सबसे विख्यात विद्यालय है. He had also studied at Oxford. तो वो ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ाई किए थे. So Tamal Krishna Maharaj asked him, "Have you read Bhagavad Gita?" तो तमल महाराज ने उनसे पूछा था कि आपने भगवद गीता पढ़े हो क्या? He's a Sanskrit professor. He's a big guy. And you're thinking, what? Of course I've read Bhagavad Gita. उन्होंने कहा कि क्या आप बात कर रहे हैं? संस्कृत प्रोफेसर हूँ. क्या मुझे बोल रहे भगवद गीता नहीं पढ़े हो? मैं पढ़ा हूँ उसको. Then, thank you. Then Tamal Krishna Maharaj asked, "Did you understand it?" तमल महाराज ने पूछा क्या आप उसको समझे हो? What? Oh, I'm reading it in Sakura. He said, "Of course I understood it." मैं पढ़ाई कर रहा हूँ क्या मुझे नहीं समझा हूँ मैं समझता हूँ उसको. Then Tamal Krishna Maharaj asked, "So what are you going to do?" तमल महाराज ने पूछा कि आप उसको समझे हो तो आप क्या करने वाले हो? In other words, the knowledge should produce some action. You understand Bhagavad Gita, what are you going to do with you? Actually, if you act, suppose, sorry. तो अगर आप उसको समझे हो तो कुछ करना चाहिए. हमारा ज्ञान जब तक क्रियाशील नहीं होगा तो क्या फायदा उस ज्ञान का? Here's a very nice young man. इधर एक छोटा सा बालक बैठा है. Yeah, we're talking about you. He has very nice tilak on. You're a nice boy. बहुत सुंदर तिलक है. So suppose I say, "Can you get me a glass of water?" अगर मैं उनको कहूँगा कि एक गिलास पानी क्या सकते हो क्या? And he says, "Jai Maharaj." But he doesn't move. वो बोलेंगे जय महाराज बोलेंगे और कल बैठे रहेंगे. I say, "Prabhu, can you get me a glass of water? I'm sitting here. I have to, can you get me?" And he says, "Jai Maharaj." But he doesn't move. वो बोलेंगे कि आप वापस सुनेंगे अपना पानी लेके आओ, लेकिन वो बोलेंगे जय महाराज और हिलेंगे ऐसे बैठे रहेंगे.
So on one level, he heard me. You know, the sound vibration went into his ear. He heard me. तो ये तरीके से देखा जाए ये जो ध्वनि है उनके कर्णों में प्रवेश किया है उन्होंने सुना है. He understood me. Oh, Maharaj wants some water. तो मुझे समझे भी है उनको महाराज को पानी चाहिए करके. But if he doesn't get up and actually do it, did he really understand me? जब तक वो उठ के कुछ करेंगे नहीं, क्या सच में मुझे समझे क्या हो? So the conclusion of Bhagavad Gita is what? तो भगवद गीता का सार क्या है? People will say, "Oh, I know Bhagavad Gita. Bhagavad Gita means do your duty." तो सब लोग बोलते हैं हाँ भगवद गीता का अर्थ है जानते हैं कि हमको अपना कर्तव्य करना है. You just, you know, whatever your dharma, you just take care of your family and you work hard and you pay your bills and you drop dead ki jai. तो हमारा काम करना है, थोड़ा धन कमाना है और अपने जो जितने भी लोग हैं वो सबको पेमेंट करना है और साथ साथ में कुछ घरेलू कार्य करना है. सुखी रहेंगे इसको चाहिए. But what does Krishna say in the 18th chapter, 1865 Bhagavad Gita? Krishna says, Sarva Dharma Parityaja Mamikam Saranam Braja. That the essence of all Dharma is. तो भगवद गीता के 18वें अध्याय में 65वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि सारे धर्म का जो है वो क्या करना चाहिए? He says, surrender unto me. सारे धर्मों को त्याग करके शरण लेना चाहिए. You give up all other dharmas, jnana yoga, karma yoga, so many different things, so many, duty to this, and you just become my devotee. तो भगवान ने कहा कि हर प्रकार के जो कर्म ज्ञान जो है इत्यादि सबको त्याग करके और मेरे शरण में आना चाहिए. People will say sometimes, I'm just thinking how to say this. I guess we'll say it this way. Sometimes they say, if there's God, why doesn't he just come down here and straighten everything out? तो कुछ लोग कहते हैं अगर सच में भगवान है तो इधर उधर के इधर प्रकट होके सबको सीधा क्यों नहीं करते? There's all kinds of fighting and trouble and confusion and this and that, and why doesn't he just come down here and say, do this, don't do that, and settle the whole issue? तो भगवान आके ऐसा क्यों नहीं करते कि ये जो इतना सारा अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, उन सबको सीधा क्यों नहीं करते? ये करो, ये मत करो, ऐसा क्यों नहीं कहते? And the answer is, he does. तो उसका जवाब ये है कि हाँ वो कैसे करते हैं. Haritanaya sadhunam vinasaya chadushkitam dharma samstapanartaya sambhavam yuge yuge. सत्य युग में आगे धर्म की स्थापना करते हैं और साधुओं को परित्राण करते हैं. He does come. वो आते हैं, निश्चित रूप से आते हैं. You know, Vedic system is cyclical. It runs, the Vedic time runs in a cycle of yugas. तो ये जो वैदिक सिस्टम जो है, वेदों की प्रणाली जो है, ये युगों का चक्र के हिसाब से चलता है. And in every yuga, because every yuga, there's Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga. ये चार युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली. What yuga are we in now? हम कौन से युग में हैं? What do you think? No doubt about it. It's definitely Kali Yuga. Quarrel, confusion, people are lazy, misguided, unlucky, and above all, always disturbed. That's what Bhagavatam says, first canto. सभी लोग उनका बुद्धि भंग रहता है और स्मरण शक्ति कम रहता है, शरीर भी ठीक नहीं रहता है और प्राय सभी लोग जो है चिंतित रहते हैं. We were driving out here. How many? So many big skyscrapers. That the thing was 40 floors, and I think 5 floors, 5 flats. Prabhupada said human life is not meant to live like a pigeonhole in a skyscraper building. There's a little, you see, when you're driving, it looks like a little pigeonhole. And I was thinking, even the pigeons, they get to fly in and fly out, and we've got to take the elevator,
Oh, I'm sorry. हमारे जो रास्ते में हमने 40 माले की बिल्डिंग देखा, उसके अंदर 5-5 फ्लैट है, उसके अंदर एक माले में। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारा जीवन का लक्ष्य ये है कि एक चिड़िया जैसा एक चिड़िया की पिंजरे में रहना, बोले कम से कम चिड़िया जो पिंजरे से बाहर आके उड़ सकता है, तो ये हमको तो एक गिफ्ट यूज करना पड़ता है। So Krishna ends Bhagavad Gita that the essence of all truth is you just surrender to Man mana bhava mad bhakto madhyadi mam namaskuru. You become my devotee, you bow down to me, you offer respects to me, and you'll come to me. That's what Krishna. That's what Bhagavad Gita says. भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, आप मेरा शरण लो, मुझे प्रणाम करो, मेरा भक्ति करो, ये कृष्ण का आदेश है। But in Kali Yuga, not you, you're all nice devotees. ये कलयुग में मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप तो बहुत अच्छे भक्त हो। But in Kali Yuga, people are a little dull-headed. कलयुग में जो है लोगों का जो बुद्धि कमजोर रहता है। And they're especially dull-headed in the West. तो खास करके पाश्चात्य देश में तो वो कार्य है ही। One man said to Prabhupada, "This chanting is brainwashing." तो एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को कहा, ये जो कीर्तन जो है आपका चैंटिंग जो है वो दिमाग को साफ करने वाला चीज है। Prabhupada said, "If the brain is dirty, shouldn't you wash it?" तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आपका दिमाग खराब है या उसके अंदर मैल है तो उसको तो साफ करना ही होगा ना। And then Prabhupada said, "Actually, get a brain, then we'll wash it." प्रभुपाद जी ने कहा, पहला तो आप दिमाग को लो, बाद में साफ करेंगे। The man said, "I have a brain." तो व्यक्ति ने कहा, मेरे पास दिमाग है। Prabhupada said, "If you have a brain, it is cow dung." Jai Prabhupada. अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो दिमाग नहीं है बल्कि गोबर है। So in Kali Yuga, people are so dull-headed. तो कलयुग में लोग जो है उनका बुद्धि बहुत मंद रहता है। So Krishna is so kind. He says in Bhagavad Gita, conclusion of Bhagavad Gita, you should surrender to me. But people are so dull-headed, they don't know how to do it. तो भगवद्गीता में भगवान कहते हैं कि आप मेरा शरण लो, लेकिन कलयुग में लोगों का बुद्धि इतना मंद है कि ये कैसे करना चाहिए उनको नहीं मालूम। So Krishna comes himself in Kali Yuga as Sri Chaitanya Mahaprabhu as the perfect bhakta. तो इस प्रकार कलयुग में वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आते हैं और किस रूप में आते हैं, एक भक्त के रूप में आते हैं। You know, sometimes the teacher, the student is struggling. Little student, A, B, C. They're struggling. They can't do it right. They're on the chalkboard, A, B, C, like that. तो आपको मालूम है कभी-कभी बच्चे जो है एकदम टूटे बच्चे होते हैं, वो A, B, C लिखने को नहीं होता उनको। And the teacher will say, no, do like this. And the teacher with her own hand will take the child's hand, A, B, C, and then the child learns. तो इस प्रकार टीचर क्या करती है, उनका हाथ पकड़ के सिखाती है कैसे ये लिखना चाहिए, कैसे भी लिखना चाहिए। So Chaitanya Mahaprabhu is Krishna come again in the age of Kali as the Yuga avatar to show us conclusion of Bhagavad Gita, how to surrender to Krishna. तो कृष्ण वही है, श्री चैतन्य महाप्रभु है, वो किस रूप में आए, हमको कैसे भगवान श्री कृष्ण का शरण लेना चाहिए, वो जो भगवद्गीता में आदेश दिए हैं उसको हमको सिखाना चाहते हैं। That is the external reason. There's an external reason and an internal reason. ये जो कृष्ण का प्राकृतिक चैतन्य महाप्रभु में वो उसका बहिर्मुखी कारण, एक होता है बहिर्मुखी कारण, दूसरा है अंतर्मुखी कारण। We'll talk about the internal reason a little later on, but I want to talk about the external reason first. भगवान चैतन्य महाप्रभु प्राकृतिक के पीछे जो अंतरंगी कारण है उसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं जो चैतन्य महाप्रभु प्राकृतिक के पीछे जो बहिर्मुखी कारण है उसको चर्चा करूंगा। So Chaitanya Mahaprabhu, he appeared 500 plus years ago in Mayapur, Bengal. तो चैतन्य महाप्रभु 500 साल से ठीक थोड़ा सा अधिक साल पूर्व बंगाल में मायापुर में प्रकट हुए। And even in his childhood pastimes, he had wonderful sublime pastimes. उनकी बाल लीलाओं में भी बहुत सुमधुर लीलाओं को उन्होंने प्रकाशित किया। Krishna, or God,
He's God on the lap of Mother Yasoda. He's God speaking Bhagavad Gita. He's God when he's showing universal form. कृष्ण जो है वो भगवान है, यशोदा के गोद में भी भगवान है, और जब वो दिव्य विश्व दिखाने के समय भी भगवान है, और अन्य के समय में भी वो भगवान ही है. It's not that by meditation Krishna became God. ऐसा नहीं कि कृष्ण ध्यान करके भगवान बने. You know, they advertise something that you meditate and you'll become God. तो कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञापन करते हैं कि आप ध्यान करो और भगवान बन जाओ. Now here's a simple question of logic. एक तर्क का विषय है कि मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा. While you're meditating and becoming God, who's running the whole show? Who's God? While you're becoming God, who is God maintaining everything? तो जब आप ध्यान करके भगवान बनने का प्रयास कर रहे हो, तो उस समय भगवान कौन है जो आप सबको पोषण कर रहा है? कौन भगवान जो आपको पोषण कर रहा है? You know, Prabhupada was in the early days, 1966. He's in New York City. प्रभुपाद जी 1967 में जब न्यूयॉर्क सिटी में थे, तो ISKCON की शुरुआत के समय था. So some guest came to see Srila Prabhupada. उस समय कुछ अतिथि आए प्रभुपाद को देखने के लिए. And the guest said, "Oh, I've met a Swami from India and he is God." तो वो उस अतिथि ने कहा प्रभुपाद जी से, मैंने एक स्वामी जी से मिला, वो भगवान है. And I'm going to God's darshan today. आज मैं भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ स्वामी जी. So this young man came the next day to see Srila Prabhupada. अगला दिन प्रभुपाद जी को वापस मिलने के लिए आए. Prabhupada said, "So how was your darshan with Bhagavan?" प्रभुपाद जी ने पूछा, कैसा था तुम्हारा दर्शन भगवान के साथ? The student said, "Oh, it was cancelled. He had to go to the dentist." कैंसिल हो गया क्योंकि उसको एक दांत के डॉक्टर के पास जाना पड़ा. So Prabhupada said, "We're not interested in this kind of God, you know." प्रभुपाद ने कहा कि इस प्रकार का भगवान में कोई रुचि नहीं है. So, as Krishna on the lap of Mother Yasoda, he's, you know, Bhutana, so many things, lifting Govardhan hill. He didn't have to lift weights to become God. तो कृष्ण के बालक के रूप में हमने पूतना को किया, इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत को उठाया. ऐसा नहीं कि उनको कोई बड़ा मतलब करना पड़ा गोवर्धन को उठाने के लिए. So similarly, Chaitanya Mahaprabhu, this is one pastime of Chaitanya Mahaprabhu, as a small child. एक चैतन्य महाप्रभु की लीला को वर्णन करूंगा एक छोटे बालक के रूप में. So he was outside in the courtyard of his house. तो उसका घर के प्रांगण में थे बाहर. And his mother brought him some nice sweetmeats, some sandesh, some burfi like this, to give him some nice sweets to eat. तो उनकी माँ ने उनके लिए कुछ संदेश, कुछ बर्फी ऐसा कुछ मिठाई लेके दिया. And she went back to the kitchen to get some mango, some sliced fruit. She went back to get something else. वापस वो रसोई में गई कुछ फल लेके आने के लिए, कुछ आम इत्यादि फल लेके आने के लिए. And when she came back, what is this? She saw Chaitanya Mahaprabhu is eating dirt. तो चैतन्य महाप्रभु को वापस देखने के लिए आई, तो महाप्रभु क्या कर रहे थे उधर? मिट्टी खा रहे थे. He said, "Why are you eating dirt? If you eat dirt, it will make you sick." तो महाप्रभु ने कहा, क्या कर रहे हो तुम? ये अगर तुम मिट्टी खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे. So Chaitanya Mahaprabhu, he began speaking impersonal philosophy, Mayavad philosophy. तो चैतन्य महाप्रभु उस समय मायावाद दर्शन को बोलने लगे. He said, after all this world is earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, faults. You know, Sankhya Yoga, 25 elements. So all this is a river of names of these 25 elements. तो समय शांति को वर्णन करते हुए उन्होंने पृथ्वी जल की वायु आकाश तत्वों को गणना करते हुए कहा कि ये पूरा जगत जो है इन तत्वों से बना हुआ है. Every form in this world goes through birth, growth, maturation, culmination, you know, apex, decline, and dissolution or death. Every form is going through these stages: birth, growth, maturation, culmination, decline, and death or dissolution. Every form in this world. इस जगत में प्रत्येक जो वस्तु है, प्रत्येक जो रूप है, उसका जन्म होता है, वो कुछ उगता है, कुछ समय के लिए रहता है, और कुछ अन्य प्रकार में जन्म देता है, और वृद्धाप्य को प्राप्त करता है, अंत में उसका मृत्यु होता है. इसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक जीव, प्रत्येक वस्तु को अनुभव करना पड़ता है. This body
Now I'm functioning with it, but it has three things it's going to become. It's going to become dust, ashes, or stool. That will be the destination of his body. Again, it will become... Okay. ये जो शरीर जो है इसका तीन परिणाम है. ये अंत में मृत्यु के बाद ये धूल बन जाता है या मल बन जाता है या आहार बन जाता है, राख बन जाता है. So Chaitanya Mahaprabhu said to his mother, so these sweetmeats, this is nothing but the transformation of these 8 elements. Now it's in this form, eventually be in that form. It's really non-different than dirt, so I can eat dirt. तो आपने जो मिठाई दिया है वो भी उन्हीं तत्वों से बना है जिसके तत्वों से ये मिट्टी बना है. अंततः दोनों में कोई भेद नहीं है. His mother said, no. उनकी माँ ने कहा नहीं तुम बोल रहे हो गलत है. Different things have different purposes. तब उनकी माँ ने कहा ठीक है, आप जो बोल रही है ये जो हर एक वस्तु का अलग-अलग उद्देश्य रहता है. If I have a nice clay pot, that clay pot is nothing but dirt, isn't it? Not clay pot, nothing but dirt. तो मेरे पास मान लो कि मिट्टी का मटका है, तो मिट्टी का मटका मिट्टी से बना है. I pour water in that clay pot, I can carry it very nicely here and there. और उस मटके में पानी डालोगे तो मैं उस पानी को कहीं नहीं ले जा सकता. Jai Shri Radha Hare. Jai Baladev Subhadra. But if I just take dirt lying on the ground and I pour water on it, what happens? It just goes into the ground. कोई मिट्टी के अंदर पानी डालोगी तो वो जो मिट्टी है वो पूरा गीला हो जाएगा, वो पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते. So Sachi Mata, Lord Chaitanya's mother, said, we don't accept this that everything is one and everything is the same. It's all Brahman, but it has different forms, purposes, and places. तो ब्रह्म है, लेकिन वो अलग-अलग रूप को धारण करता है. इधर जैसे एक का प्रयोजन से हमको उसको इस्तेमाल करना चाहिए. So Chaitanya Mahaprabhu, he said, now he's convinced he won't eat dirt. He took the nice sandesh. Now here's the reason I selected that story. We hear so many things that sound pretty, but the conclusion ultimately takes us to a foolish point. तो हम बहुत सारे चीजें हम सुनते हैं, लेकिन अंततः ये सारी चीजें जो श्रवण किया है ये हमको मूर्खता की ओर लेके जाता है. There is one so-called Swami, एक स्वामी जी है, स्वामी है, and he says the conclusion of the Vedas and Bhagavad Gita is to surrender to Hare. तो उन्होंने कहा कि सारे वेदों का एक ही उद्देश्य है कि हमको हरि का शरण लेना है. Now what does Hare mean? तो तब उसका वाक्य शुरू होता है कि हरि का क्या है. We Vaishnavas, we don't say this. He says this. हम लोग ये बात Don't misunderstand. हम जीवन तो कि हमारा मंतव्य है कि हरि संस्कार से जो देने वाले मिल रहा है वो अन्य प्रकार के स्वामी का मंतव्य है. So the conclusion is surrender to Hare. तो सिद्धांत है कि हमको हरि का शरण लेना है. What does Hare mean? हरि कौन है? Hare means one who takes away. हरि का अर्थ है जो हर लेते हैं. Who takes away? कौन लेके जाता है? Thieves take away. वो चोर लोग लेके जाते हैं. When are thieves active? तो कौन है, कब है जो चोर लोग कब एक्टिव रहते हैं? When are thieves? I know none of you are professional thieves, so but when are thieves active? तो जो चोर लोग हैं कब उनका कार्य होता है, क्रियाशील कब रहते हैं? When are they active? Nighttime. So at nighttime everything is dark. तो रात के समय जो है वो हर चीज अंधेरा रहता है. When everything is dark, everything is unknown. तो सब कुछ अंधेरा रहता है तो कुछ भी पता नहीं रहता है. So when it says surrender to Hare in Shastra, it doesn't mean to the personality Bhagwan, it means surrender to the unknown. जब कहा गया है कि हरि का शरण लेना चाहिए, हरि का अर्थ है अनजान. Suppose I tell this young man here, please touch your nose. Hey, I'll ask you as an audience, please touch your nose. तो आप पूछो तो आपने नाक को स्पर्श कीजिए. No.
It's a simple thing. The truth is simple thing. You don't have to make big, complicated. The reason they make it complicated. Okay, I'm sorry. I get a little fired up. Is it? All right. So there are some. We are hearing so many messages. The average American under hypnosis can remember over 357 commercial jingles. You know, advertising slogans. Under hypnosis, all that is rattling around in the brain. Yeah. तो अमेरिका में जो लोग हैं उनको कोई भी शरीर में एक तरह सा है वो इलेक्ट्रॉनिक करके कुछ मानसिक क्रिया करने के द्वारा वो 350 विज्ञापन की जो चीजें हैं और उनकी जो वाक्य है वो स्वर में आ सकता है. Good reason for brainwashing. इसलिए हमको उनका दिमाग साफ करना पड़ेगा. They have all these slogans, but behind these slogans is a philosophy. तो प्रत्येक विज्ञापन का जो उनका जो वाक्य होता है विज्ञापन के वाक्य उसके पीछे एक बड़ा सिद्धांत रहता है. I don't know if it's still current, but you know Nike shoes? Nike shoes? मालूम नहीं आपको अभी भी मिलता है कि नहीं आपको मालूम है नाइकी जूता मिलता है इधर. Nike shoes? Yeah, they know. Their slogan is just do it. You've seen that? Just do it. ये नाइकी जूता का जो स्लोगन है उसका है just do it, just करते जाओ. But don't you think it's a good idea to think about it before you do it? I think you should you jump off a cliff, just do it, you know? No. You should think about it. क्या करने से पहले विचार करना चाहिए कि नहीं? विचार के बिना कोई कर दे तो ये मूर्खता है. You know this Coca-Cola? They have Coca-Cola there. Yeah. It used to just be Pepsi. Now you have Coca-Cola. Yeah. Their slogan is, Coca-Cola is the real thing. All it is brown fizzy water. And if you leave it alone, it loses all its fizz. It has no nutritional value and it rots your teeth. So how is it the real thing? It's not real at all. My point is that we're getting all of these messages that tell us we're this body, we're meant to enjoy, there's no God, just eat, drink, and be merry, and tomorrow you will die. Do you know the devotee Vaisheshika Prabhu? Anyone know Vaisheshika? He's coming from the West. He's a wonderful devotee. He's one of the most, if not the most powerful book distributor in the world. So I was listening to him one time, and because he always gives nice answers to things, you know. So at our Los Angeles Rath Yatra, they have a question and answer booth. So someone asked, they don't know anything in the West. They asked, what does this Hare Krishna mean? His answer was, it means I need help. Nice answer. Now people think, no, what is this? You Vaishnavas, you spiritual people, you're all weak and you have to pray to God and and you're depending on God to save you and you're afraid of death. I said, but I'm an honest man. I work hard, I've built my own country, and when death comes, so be it.
इस प्रकार बोलते हो, देखिए हम तो ऐसे ही हैं, हम शक्तिशाली लोग हैं, हम काम करते हैं और हमारा देश का निर्माण करते हैं। I am a self-made man. I don't depend on anyone. मैं जो है अपने आप को शक्तिशाली बनाता हूँ, मैं किसी को निर्भर नहीं करता हूँ। Have you ever heard this? Oh yeah, it's out there. It's part of the ethos or the very fabric of the modern worldview. तो ये जो है आजकल के आधुनिक सभ्यता का ये सिद्धांत बन गया है। So one man said this to me. एक बार एक कहा, I said, okay, don't depend on air. Hold your breath. तो मैंने कहा कि हवा के ऊपर निर्भर करो, तुम सांस मत लेना चलो। Who here? How long can you hold your breath? तो कितना समय तक आप सांस के बिना जी सकते हो? I think the deep, they call it free diving. I think they can hold their breath. Is it 8 minutes? Maybe 7 minutes? 9 minutes? Let's give them 10 minutes. They can hold their breath 10 minutes. आप जो डाइविंग करते हैं, कोई डाइविंग करता है 7 मिनट या 8 मिनट, ठीक है 10 मिनट ले सकते हैं, 10 मिनट के ऊपर कोई अपना सांस के बिना रह सकता है? And then they have to breathe. उसका सांस लेना ही पड़ेगा उनको। So to admit an honest dependency is not a sign of weakness, it's a sign of intelligence. तो हमारी जो निर्भरता है उसको स्वीकार करना ये हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी बुद्धिमत्ता है। If I told you, you're all intelligent, Vaishnavas and Vaishnavis, if I sat here and told you, I don't depend on air, तो आप सब लोग बुद्धिमान हो, अगर मैं आपका वैष्णव बताऊंगा मैं हवा के ऊपर निर्भर नहीं करता हूँ। some of you may think, oh, he's a great yogi, maybe he's Bhagavan. But the thoughtful people know, what is this nonsense rascal? He has to breathe. तो आप मान रहे हैं, कुछ लोग सोचेंगे, बुद्धिमान लोग सोचेंगे, क्या फालतू बात कर रहा है, ये तो हर व्यक्ति को सांस तो लेना ही पड़ेगा। I was riding on the plane from Calcutta to Mumbai. तो मैं एक बार प्लेन में हवाई जहाज में चला था, कोलकाता से मुंबई आने का। And this man said to me, he said, Swamiji, I am an atheist. तो मेरे साथ में बैठाने वाला ने कहा, स्वामी जी मैं एक नास्तिक हूँ। I'm a little fiery, it's part of my personality. मैं बड़ा सा उत्तेजनात्मक भोजन देता हूँ, ये मेरा व्यक्तित्व का स्वभाव है। He said, I'm an atheist. I said, then you are a fool. मैंने कहा कि तुम मूर्ख हो। Shocked. एकदम प्रसन्न गया। So I asked him, I said, what do you work as? मैंने पूछा कि आप क्या काम करते हो? He was very proud. He said, I am an aeronautics engineer. मैंने कहा कि मैं हवाई जहाज का इंजीनियर हूँ। So I said, okay, you work on airplanes, isn't it? मैंने कहा ठीक आप हवाई जहाज पे काम करते हैं, बराबर। I said, what do you design for the airplane? I said, you design the whole airplane? मैंने कहा कि क्या आप डिजाइन क्या करते हो? पूरा एयरप्लेन का डिजाइन करते हो आप? He said, no, Swamiji. मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा पूरा नहीं करता हूँ। He said, I guide a team and we design the hydraulic system for the 77 Dreamliner. तो उन्होंने कहा कि मेरा एक टीम है, तो उधर एक तेल से चलने वाला एक यंत्रण का निर्माण करते हैं। I asked him, how many people are on your team? He's team leader, how many on his team? मैंने पूछा कि आपकी टीम में कितने लोग हैं? He said, oh, 33 people. मैंने कहा कि 33 लोग हैं। I said, okay, and how many systems? There's hydraulic system, there's mechanical system, there's the engine, I said, electrical system, there's so many. I said, how many systems? He said, major systems, maybe 35. मैंने कहा कि आपका निर्माण के डिजाइन में कितने प्रकार के वो सिस्टम है? ये तेल का सिस्टम है, आपका बिजली का सिस्टम है, यंत्रीकरण का सिस्टम है, कितने हैं? मैंने कहा कि कम से कम जो मुख्य विभाग को 35। So 35 major teams, each with an average of 30 on it. What is that? What is the math from that? I'm fasting, so I'm a little tired. Close to 900, yeah. So 900 engineers for designing that airplane. तो कम से कम 900 लोग 35 विभाग के कम से कम 30 लोग मिलेंगे, तो 900 लोग तो काम करते होंगे। So then I asked him, I said, and that's just, I said, don't you have subcontractors? So many pieces you're buying that are, he said, oh, so many subcontractors. तो उसके साथ साथ बहुत सारे वैसे उप कार्यकर्ता जो हैं
उन सबको तो आप लोग काम देते होंगे। So I said, total engineers for design, including subcontractors, how many engineers to design that one airplane? तो एक विमान का निर्माण करने में कितने इंजीनियर की आवश्यकता होता है? He said, oh, Swamiji, I don't know, 2,000, 3,000 or more. स्वामी जी मैं नहीं कह सकता, 2,000 3,000 भी हो सकते हैं। So I said to him, now let me ask you a question. Krishna says in Bhagavad Gita, what is it? Bhoktaram Jagasapalam Sarvaloka Maheshwaram. तो कृष्ण कहते भगवंता में सर्वलोक महेश्वरम। He's saying he's an atheist, okay? But to make this little plane fly in the sky took over the intelligence over 3,000 engineers. तो ये जो छोटा सा विमान बनाने के लिए 3,000 लोगों की बुद्धि की आवश्यकता पड़ा। And they crash sometimes, isn't it? Isn't it? कभी-कभी विमान में क्रैश होता है। And you have to put, they make an announcement, you know, we're going to have some turbulence, please put on your seatbelt, and the plane is rocking like this, isn't it? कभी-कभी ऐसा अनाउंसमेंट होता है कि हवा में कुछ ऊपर नीचे है, इसलिए आप संभाल के रहिए, बेल्ट लगाइए। And these things are flying, I think maybe 500, 600 miles an hour, something like that, isn't it? Something like that. Now let's study this planet Earth. It's just one planet, unlimited planets. Let's let's just take one planet, planet Earth. So the airplane that this atheist designed is going 500, 600 miles an hour. तो ये जो नास्तिकों का बना हुआ जो विमान है 500-600 मील रफ्तार में जा रहा है। The planet Earth is going around the sun at 1,800 miles a second. तो ये जो पृथ्वी जो है सूर्य के आजू बाजू 1,800 मील पर सेकेंड वो रफ्तार से जा रही है। And just to completely bewilder us, it's also spinning. So it's traveling and it's spinning. तो साथ-साथ वो घूम भी रहा है, वो अपने स्थान पे भी वो घूम रहा है। Do any of you ever get an announcement? We hear a voice in the sky, planet Earth is going to have some turbulence, please put on your seatbelt. Does it ever happen? तो यहाँ पे अनाउंसमेंट सुना आकाश से भी ये जो भूमि का ग्रह जो है वो हवा का कुछ ऊपर नीचे होने की वजह से थोड़ा सा टर्बुलेंस होने वाला है, आपका बेल्ट बांधिए। Does it ever crash? क्रैश हुआ है। And they're thinking, what are those, like the biggest plane, jumbo jet? How many people on the jumbo jet? कितने लोग हैं जम्बो जेट? Anyone know jumbo jet? More than 300, I think. Fine, let's give them a big number. Let's be generous. 500 people. What's the population of the Earth? 6 billion plus. And it has vast oceans. It has the Himalayan mountains. So they're very proud. 3,000 engineers, the best brains, IIT graduates, best brains, to make this little airplane. तो वो इतने सर्विस होते हमदार हैं उसके अंदर ये छोटा सा विमान बनाया 3,000 लोग मिलके बड़े-बड़े आईआईटी से ग्रेजुएट करने के बाद भी केवल 500 लोगों को नहीं जा सकता है बस। And this planet Earth spinning, flying around the sun, carrying 6 billion people with no disturbance. That happened by chance with no intelligence? ये जो भूमि है जिसके अंदर 600 करोड़ है जितना आबादी है और सब रफ्तार में चल रहा है, लेकिन वो फिर भी कोई नुकसान नहीं होता है, कोई घबराहट नहीं है इसके अंदर। तो ये क्या कोई इंसान से बना है? So we're not talking magical thinking, oh, sentiment blind faith. हम लोग कोई चमत्कारी चीज या कोई अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे हैं। All I said to this atheist, I said, please be consistent in your logic. Just be consistent. Maintain the same measure and standard. Make the airplane took so much intelligence, a much better airplane, this planet, it must require even better intelligence, Krishna's intelligence.
तो मैं हमारा यही है कि आपको क्या कि आपका जो तर्क है वो बराबर रखिएगा। अगर आप ये सोचते हो कि विमान बनाने के लिए 3000 लोग बुद्धि की आवश्यकता है, पृथ्वी बनाने के लिए कम से कम उनसे बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता होगा, वो कितना बुद्धि है कितना। So he didn't know what to say at that point. उनके पास कोई जवाब नहीं था। So he came back from another angle. He tried another argument. तो और एक तर्क प्रस्तुत किया उन्होंने। He said, "But I'm an honest man. I'm a moral man." तो उन्होंने कहा कि मैं एक नैतिक व्यक्ति हूँ, मैं हर प्रकार की जो नेक और सज्जन। So I noticed he had a cup of tea and he put some milk in his tea. तो मैंने देखा उसके पास टी था, उसके अंदर उसने थोड़ा टी डाला। I said, "You drink milk. I noticed you drink milk." He said, "Yes, Swamiji, I'm drinking milk." उन्होंने कहा कि अपना दूध पीते हो? हाँ, मैं दूध पीता हूँ। I said, "Okay, fine. I'm going to give you some grass and you make me some milk." तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको कुछ घास देता हूँ, आपको दूध बनाओ। I said, "Oh, fine." I said, "You want to be an honest man? Make your own milk. Here's some grass. Make me some milk." ठीक है, आप सच्चे व्यक्ति हो, नए व्यक्ति हो ना, नैतिक व्यक्ति हो ना, ठीक है, मैं आपको घास देता हूँ, दूध बनाओ। He said, "Oh, I can't do that." मैं क्यों नहीं कर सकता? And then I said, "Then you're not honest." I said, "You're a thief. You're stealing Krishna's milk and you will not even recognize it." असल में आप सच्चे व्यक्ति नहीं हो, नैतिक व्यक्ति नहीं हो, नैतिक व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि कृष्ण का दूध चुरा के ये बोलते हो कि कम से कम इतना तो बोलो कृष्ण ने दिया। And so then he said, "Oh, Swamiji, I have to go to the toilet." He went away. So, just as Chaitanya Mahaprabhu was speaking this nonsense philosophy that how you can eat dirt, they're saying all kinds of nonsense things and people are believing it. तो जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने ये जो नास्तिकता का तर्क पेश किया था, उसी प्रकार अनेकों लोग जो हैं वो ये जो नास्तिकता का तर्क को पेश कर रहे हैं। We're living in a society that people are trained to be consumer units. तो हम ऐसे ही एक समाज में रह रहे हैं, जी रहे हैं, जहाँ हर एक व्यक्ति को एक उपभोक्ता How to translate consumer unit? I'll help you. Little hard, I understand that. I was thinking about it. The prevalent philosophy is if you get more, if you get bigger, if you get so-called better, you will enjoy. तो ये जो कंज्यूमर यूनिट का व्याख्या करते हैं कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हम ऐसा शिक्षा प्रदान किया जा रहा है जितना आप वस्तुओं को संग्रह करोगे उतना आप सुखी रहोगे। I don't mean to pick on the ladies, but I'm just using this as an example. Don't get mad at me. I'm in saffron cloth. I have to say something. मैं कुछ स्त्रियों के विषय में कहने वाला हूँ, बुरा मत मानिएगा। So the man comes home from work. जो एक पुरुष काम करके घर वापस आता है, and the wife says, "Oh, the house next door, they have a brand new car. How can we have this beat up old car? They have a new car." घर आते ही पत्नी बोलती है पति को, देखो पड़ोसी घर में तो इतना अच्छा गाड़ी है, हमारे पास तो पुराना गाड़ी है। Husband says, "No, car is working fine. It gets you from point A to point B. What's the problem?" तो क्या समस्या है? हमारा जो कार तो अच्छा चल रहा है। And the wife says, "No, but it has all dents and it's old and I want a new fancy one." तो पति कहती है, नहीं, ये तो पुराना हो गया है, वो तो अभी मुझे तो एक अच्छा फैंसी वाला चाहिए। I want a better car than the lady next door. जो बाजू वाले जो पास घर है, जो गाड़ी है, उससे अच्छा गाड़ी मुझे चाहिए। So the man has to work harder, isn't it? Because he has to make more money to get a bigger car. तो उसके लिए पुरुष को क्या करना होगा और ज़्यादा काम करना होगा। And he's got to get a big screen TV. तो उसके लिए बहुत बड़ा टीवी की करना पड़ेगा। Yeah, so many things. More. Bigger. तो जितना हो सके ज़्यादा उतना बड़ा चीज को प्राप्त करना। But what does Krishna say about this in Bhagavad Gita? तो कृष्ण क्या कहते हैं भगवद गीता के विषय में? Krishna says that lust burns like fire and is never satisfied. तो कृष्ण कहते हैं ये जो काम है वो ऐसा अग्नि है जो कभी संतुष्ट नहीं होने वाला है।
We have a little time, so I'll tell a quick story. मेरे पास तो समय है, इसलिए मैं एक छोटा सा story बताऊंगा। I have an older brother, मेरे पास एक मेरे बड़े भाई है, and we used to always get into trouble. हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करते थे। My father used to call my older brother was fool number 1, and he called me fool number 2. हमारे पिताजी जो है, हम दोनों को बुलाते बोलते थे कि फूल नंबर 1 को बड़े भाई बोले और आप जो है फूल नंबर 2। I had a very good father and mother by Krishna's grace. They were very good. कृपा से मुझे बहुत अच्छे माता पिता मिले। My father used to say, because fool number 1 is the one who gets a foolish idea. तो ये जो फूल नंबर 1 जो है, वो एक मूर्ख विचार आता है उसके मन में। And fool number 2 is the one who enthusiastically carries it out. मूर्ख नंबर 2 जो है, उस विचार के ऊपर कार्य करता है। So one time for holiday, my family, we went camping. तो एक बार हमारा हॉलिडे था, हम पूरा परिवार एक कैंप में गए थे। You know, when you're out in the forest and there's some lake there, so my father made a little campfire. You know, it's fun. तो मेरे पिताजी हम सब गए थे, तो एक तालाब था, तालाब के नजदीक में एक थोड़ा सा कैंप पर आग लगाए थे। So, and then when it was time to take, we were staying in a tent like that. When it was time to go to bed, my father took, I didn't know exactly what, I was only 4 years old. तो जब हम एक टेंट लगा के रहते थे, तो मेरे पिताजी ने कुछ दिया था, पता नहीं वो क्या था, लेकिन मैं उसमें भी 4 साल का था। I was 4, my brother was 6. मेरा उम्र 4 साल का था और मेरा भाई का उम्र 6 साल। So my father took some clear liquid, he threw it on the fire, and the fire went out. तो मेरे पिताजी ने ऐसा एक लिक्विड लिया, वो आग के ऊपर डाला, तो आग जो है बुझ गया। So the next day, my parents, they're sitting down by the lake, they're enjoying the scene, and my brother and I get this idea, let's make a fire. तो वो जो मेरे माता पिता वो तालाब के तट पे बैठे थे, और मेरा भाई ने एक आइडिया बनाया, हम भी थोड़ा आग लगाए थे। So we got some wood, this and that, we started a little fire. तो हम थोड़ा सा लकड़ा लेके आए और थोड़ा सा घी जलाने लगे। Getting bigger, bigger, bigger. थोड़ा बड़ा होते गया। So we thought, okay, time to put it out. तो ये समय हुआ अभी हमको उसको खत्म करना है। So just as my father had done, I went and got some clear liquid in a big red can. अंदर गए, एक बड़ा कैन में एक बड़ा सा लिक्विड था वो लेके आए। Did you say red can? Red can. एक लाल रंग का कैन था, उसके अंदर लेके आए। I couldn't read, I was 4 years old. I didn't notice it didn't say, it was not water, it said petrol. उसके ऊपर बड़ा पढ़ने में तो 4 साल का था, उसके ऊपर पानी करके नहीं लिखा था, उसके ऊपर लिखा था पेट्रोल। And we threw it on the fire. आपके बताते। Now, I want you to think. 2 things happened sequentially. First 1, then 2. 2 things happened. 1 and 2. 2 चीजें हुआ, आप क्या बता सकते हैं? पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ? We threw the gasoline on the fire. What is the first thing, not the second thing? What is the first thing that happened? पहला चीज क्या हुआ? What do you say? What? They're right. First thing is fire went down. Because you put the liquid on it, cuts out the oxygen, so that it stops for a moment. तो जैसे आप कुछ लिक्विड डालोगे, तो हवा के साथ संपर्क अग्नि का संपर्क कम हो जाता है, इस वजह से वो अग्नि कम हो जाता है। Now, what was the second thing that happened? दूसरा चीज क्या हुआ? Kaboom! It burned off my eyebrows. It's true. Yeah, it's gone, singed. They came back by Krishna's grace. So if you throw, we have burning fire. The tongue is on fire, the eyes are on fire, the ear is on fire, all the different city of 9 gates. Body is called city of 9 gates. हमारा शरीर जो है ये 9 द्वार से बना हुआ एक महल कहा जाता है। तो जैसे आप उस प्रकार अग्नि के अंदर और ये डालोगे, So all these gates are on fire. ये जो 9 के 9 द्वार जो है
वो उसमें आग लग जाता है। And if you throw more fuel on that fire, bigger, new, better, whatever, तो भले बड़ा हो छोटा हो और उसके अंदर और ईंधन डालोगे तो क्या होगा? the fire does not go out, it only gets bigger. तो इस आग जो है वो बढ़ने वाला है, वो कम नहीं होने वाला है। Srila Prabhupada said, how do you measure a man's strength? तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि एक व्यक्ति का, एक पुरुष का शक्ति को कैसे आप माप सकते हो? You follow the question? How do you measure someone's strength? एक व्यक्ति का शक्ति जो है तो कैसे मापोगे? You know, they have the Olympics. How much you can lift, how far you can jump, how fast you can run. तो आप हमारे ओलंपिक में खेल कूद में वो व्यक्ति का शक्ति का माप होता है, कितना लंबा कूद सकते हो, कितना तेज भाग सकते हो, कितना वजन उठा सकते हो, इससे व्यक्ति का माप होता है। These are called feats of strength. तो ये जो है शक्ति का प्रदर्शन माना जाता है। But Prabhupada said the real measure of a person's strength is their ability to tolerate. इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि एक व्यक्ति का शक्ति का माप जो है उनकी सहनशीलता का गुण। What do we say? I'm a little tired. What is the... No. I'm thinking of... Vacho Vegam, Manasa Vedam, Krodha Vegam, all the different Vegas, all the senses are burning. But then what does it say? Etam Vega, Vishvaheta, the Diraha. So one who's able to tolerate the pushing, the burning of the senses, that is a dira. That is strength. तो असली शक्ति जो है सामर्थ्य है सहन करना, सहनशीलता ही हमारा वास्तविक शक्ति और सामर्थ्य है। So I was talking about a couple of these illusions that bring us to the wrong conclusion. So one is this atheist idea that behind creation is no intelligence. तो मैं ये जो ऐसे तत्वों के विषय में चर्चा कर रहा था, जिसके द्वारा हम गलत सिद्धांत के बढ़ाएंगे। एक है जो नास्तिकवादियों का तर्क। Another one of these myths that are rattling around in our brain is that if I get more, if I try to satisfy the senses, I'll become happy. तो ये तो है भगवान नहीं है। दूसरा ये है कि मैं अगर इंद्रिय भोग की विषयों को अगर प्राप्त करूँगा मैं सुखी हो जाऊँगा। So, okay, we've described what the negative, what is not, then what is true. तो अभी हमने जो गलत है उसके बारे में चर्चा किया, लेकिन अभी हम सत्य क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। And how does it relate to Chaitanya Mahaprabhu? और कैसे ये चैतन्य महाप्रभु के संबंध में है वो भी चर्चा करेंगे। So here's a nice brahmachari. ब्रह्मचारी है। Yeah, you. Don't worry. Okay. So suppose I give this brahmachari $100. I say, Prabhu, you use this, you buy some shastra, maybe you need some sweater, some chadar. This money is for you. अगर मान लो एक ब्रह्मचारी को मैं $100 देता हूँ, तो आप कुछ शास्त्र लो या कुछ चादर लो या कुछ स्वेटर लो, तो भी आप कुछ कर सकते हो। He's thinking, this Swami is very nice. Visit more often. So he goes back to the ashram and he tells the fellow Prabhus, hey, this Badrinarayan Swami just gave me $100. And they all say to him, gee, that's funny. He gave us $1,000. So one minute he's happy, then he's thinking, hey, wait a minute, I got cheated. Isn't it? That's human mentality. I mean, we know Atma Ram, Tushanti Cha Ramanti Cha. Our brahmachari is peaceful. But you understand the principle. They are chanting Om Jaya Jagadish Hari, give me a new car and a house by the sea.
जैसे जगदीश है मुझे नया गाड़ी It won't rhyme. It won't rhyme in Hindi, but you know. गाड़ी और एक मकान सागर के सामने तो Prabhupada said about, and I'm not just speaking on Hindi, the Hindu. In Christian, the Mahavakyam, you know, let's say we have our Mahavakyam, the 4 verses of Bhagavatam. So they have their Mahavakyam, their essence of their Siddhanta. तो जैसे हमारे शास्त्र में महावाक्य होता है वैसे एक क्रिश्चियन धर्म में भी महावाक्य है And they call it the Lord's Prayer. तो उनको भगवान की प्रार्थना कहा जाता है And one line of that prayer is, God give us this day our daily bread. उसमें उस महावाक्य के एक वाक्य ये है कि हे भगवान मुझे आज का ब्रेड हमको दे दो So Prabhupada said, that's not really love of God, it's love of bread. So you find this in lower under. At least they're going to God. Fine. At least they're recognizing that they're better than our nice atheist guy. At least they're going to the right source. But it's not a very elevated status. Like our $100, $1,000. So I was saying about Chaitanya Mahaprabhu's external reason, he's coming to this world to show us how to become a devotee. अभी हम चैतन्य महाप्रभु का प्राकृतिक पीछे जो बहिरंगी कारण के बारे में चर्चा किया उन्होंने आए और हमको कैसे भक्त बनना चाहिए उसका वर्णन किया. And his internal reason was to taste bhakti. तो चैतन्य महाप्रभु का प्राकृतिक पीछे अंतरंगी कारण जो है वो भक्ति को कैसे आस्वादन करना है वो है. He was thinking that Srimati Radharani is enjoying more than me. तो चैतन्य महाप्रभु का प्राकृतिक अंतरंगी कारण ये है कि कृष्ण सोचने लगे कि श्रीमती राधारानी जो है मुझसे ज्यादा आनंद को अनुभव कर रही है. You think, what is she tasting? What is this bhakti? What is she tasting? तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या है वो कौन सा प्रकार का आनंद को आस्वादन कर रही है. We say Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavan Ishware. She's Gaurange, golden color, golden Radharani. जैसे हम तप्त कांचन गौरी केशव को बता दें कि राधारानी का रंग जो है वो तप्त सोने का रंग है. So beautiful Sham Sundar, when he's mixed, he becomes covered with the golden Gauranga color of Srimati Radharani and comes to this world just to taste that bhakti. तो वही जो सुंदर श्याम सुंदर है वो श्रीमती राधारानी की जो आनंद है जो भक्ति में उसका वो आनंद है उसको अनुभव करने के लिए वो श्याम सुंदर आके भक्ति का आस्वादन करते हैं. Let's do a thought exercise just for a moment. हम एक ऐसा एक्सरसाइज करेंगे व्यायाम करेंगे हमारी बुद्धि का. Are you all listening? I need your help. You're all tuned in? आप सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं? Now I know you're all devotees. मैं जानता हूँ आप सब भक्त हैं. But just for a moment, think about the person that you love the most in addition to Krishna. Maybe it's your mother, your father, your brother, some school friend, your wife, your husband. Just for a moment, think about the person, get within your mind a picture of who you love the most, other than, in addition to Krishna. Okay? तो एक क्षण के लिए आप मैं चाहता हूँ मैं सोचिए कि कृष्ण के अलावा आपके जीवन में किससे आप ज्यादा प्रेम करते हो उनके विषय में सोचिए. So take a minute and think about that. एक मिनट में आप थोड़ा सा विचार कीजिए. You have a picture in your mind? क्या आपके मन में वो चित्र आया है? I did this one time on a brahmachari. I said, can I think about a gulab jamun? No, but think about a person. Now suppose that person that you love so much, you haven't seen for a long time. Now what do you think? How do you feel if that person all of a sudden walks in the door? How do you feel? You feel so happy, isn't it? Oh, my old friend, how are you? So happy to see you.
So now you have that emotion. You're seeing this friend you haven't seen, or whoever it is you haven't, and how happy you are to see them. तो जब आप वो देखोगे तो कितना प्रसन्न हो आप. Take that emotion, multiply it by 10. तो वो जो इमोशन है आपका, वो जो आनंद है जो उनको प्राप्त हुआ, उसको 10 गुना कीजिएगा. How are you feeling? तो क्या अनुभव करोगे आप? Now take that emotion, multiply it by another 10. How are you feeling? तो उसको लीजिए और उसको और 10 गुना कीजिए. कितना क्या अनुभव करोगे? And we read in Shastra the symptoms of great devotees. They become speechless, they're shedding tears, they can't, they're stunned, they collapse on the floor in ecstasy. तो दिव्य आनंद में कभी वो आंखों से आंसू गिरते हैं, कभी वो बेहोश हो जाते हैं, कभी तख्त हो जाते हैं. ये सब दिव्य भावनाओं का वर्णन है शास्त्र में. This is what Chaitanya Mahaprabhu is offering, this pure Krishna prema. तो ये हमको चैतन्य महाप्रभु प्रदान कर रहे हैं, वो है शुद्ध कृष्ण प्रेम. I was sitting in this room one time in Los Angeles, एक बार प्रभुपाद जी के कमरे में बैठा था लॉस एंजल्स में. and it was all a very cold day. It was all cloudy and cold. तो वो बहुत बादल छाया हुआ था और बहुत ठंडा था उस दिन. Everyone's, with cap and chadar and cold. सब लोग एक क्या पहने थे, चादर पहने थे, बहुत ठंडा था उस दिन. If you go to our LA temple, you can see Prabhupada's room. You can see it. अगर आप लॉस एंजल्स टेम्पल में जाएंगे तो आप वो प्रभुपाद क्वार्टर जहाँ से देख सकते हो आप. So Prabhupada was sitting at his desk. We were all sitting out here, and behind Prabhupada is a big window. There's a big window. तो सब लोग सामने बैठे थे, प्रभुपाद जी बैठे थे और उसके पीछे प्रभुपाद जी की बहुत बड़ा खिड़की था. And all of a sudden the clouds parted, and a ray of sunlight came right down, bathing Srila Prabhupada in a shaft of light. अचानक से बादल ढल गए और ये जो सूरज का किरण जो है सीधा वो खिड़की से आगे प्रभुपाद के पास आया. It was a beautiful scene. Just picture it. We're all literally and figuratively in darkness, and here's Prabhupada washed with this golden ray of sun. आप देखिए कि अचानक आप सब लोग अंधेरे बैठे थे और आप स्वर्ण कर सकते हैं ये प्रभुपाद जी के ऊपर ये स्वर्ण रंग का ये जो सूर्य कांति जो है उनके ऊपर गिरा हुआ है, बाकी सब अंधेरा हुआ. And Prabhupada, who didn't miss a thing, immediately could understand the mood. तो प्रभुपाद जी जो है तुरंत वो पूरा उस मौके का समझ गए. He said, yes. He said, someday you will feel this sunlight like your lover's embrace. तो उसी प्रकार जो है ये जो सूरज का जो किरण है आप अपनी प्रिय और प्रेमिका के बीच में जो आलिंगन होता है उसके रूप में अनुभव करोगे. This is the gift that Chaitanya Mahaprabhu is giving us. ये चैतन्य महाप्रभु ने हमको प्रदान किया है. Well, I'll tell one more story. I'll tell one story and one joke, and we'll be done. अब एक स्टोरी और एक जो बताऊंगा तो बात पूछा करेंगे. And it's true. It's a true story. ये सही कहानी. 1971, Prabhupada sent Brahmananda Swami and Pusta Krishnadas Brahmachari to East Bengal. In those days, it was East Pakistan. It wasn't, Bangladesh. It was, you know how it was. It was part of Pakistan. So they sent him to East Bengal, East Pakistan. प्रभुपाद जी 1971 में ब्रह्मानंद प्रभु उनके साथ में और एक भक्त को ईस्ट बंगाल भेजा थे. कृष्ण को ईस्ट बंगाल भेजे थे. उसमें Pakistan. पाकिस्तान था, बांग्लादेश नहीं था. And while they were there preaching in Dhaka, the Bangladesh war broke out. 1971, India-Pakistan, the war broke out. तो जब वो उधर प्रचार कर रहे थे उस समय एक युद्ध हुआ इंडिया पाकिस्तान का, बांग्लादेश का. So Prabhupada sent a telegram. He said, too dangerous, leave immediately. तो जब प्रभुपाद तुरंत एक टेलीग्राम भेजे थे कि बहुत खतरनाक परिस्थिति है, तुरंत उधर से निकल के आ जाओ. And sure enough, the Pakistani army was setting up checkpoints as you were trying to leave to get into India, and they were shooting and killing Hindus. तो उस समय पाकिस्तानी जो आदमी है
वो हर जगह लोग नाकाबंदी किए थे और जो भी आ रहे थे खासकर हिंदुओं को मार रहे थे. So people are trying to flee the country like anything. You know, they're taking off kunti mala, you know, trying to grow a beard as fast as they can. You know, Did you mention growing a beard? Trying to grow a beard? Sure enough, Brahmananda, Saffron, Danda, Sika, Kuntimala, Tilak, sitting next to him, nice brahmachari. They're riding on this bus. They got almost to the border between Pakistan and India, and they were stopped by a group of Pakistani soldiers. The soldiers got on the bus. They looked. How many things are wrong in this picture? There's effulgent saffron, Sika, Tila. They pulled them off the bus. Put them by the side of the road. Ramananda Swami, who's the Krishna Prabhu, set up the machine gun, pulled it back, and aimed. Brahmananda turned to Pusta Krishna Prabhu and said, Prabhu, put your hand in your bead bag, we're going back to Godhead. They were posing just like they were getting a photo snap. They were Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. To the credit, we want to offer credit. To the credit of the Pakistani soldiers, they could understand these are saintly people. They told the devotees, all right, you can go and go back on the bus, and they let the devotees go. In other words, the devotees, by hearing the message of Chaitanya Mahaprabhu, were completely fearless. Fearless in the face of death. This is another gift of Chaitanya Mahaprabhu's message. I was in Los Angeles. We have a wonderful Rath Yatra every year. You're all invited. If you're ever in the USA, it's the first Sunday in August. It's a wonderful festival. And I have been in charge of the free prasadam booth since 1986. So you do the math. 83. Since 1983, I've been in charge of the free prasadam booth. Now, if everything's going on smoothly, I like to slip out, and right next to the prasadam booth is question and answer booth. You know, and I like to hear how the nice senior devotees, how they're answering. I like to hear how they're, presenting Krishna Katha. So Jayadvaita Maharaj was, Jayadvaita Swami, he was in the booth answering questions. And I was at the back of the crowd. And no offense intended, but there were two very large women. They were big size. We say in America, they were land whales. Like a land timmingull. They were big size.
अमेरिका में हम उसको भूमि की सिलिंडर कहते हैं। So I was trying to see around them and see Jayadvaita Maharaj. तो कभी मैं देख रहा था महाराज जैसे महाराज बोलते हैं, But I could hear Jayadvaita Maharaj speaking. कैसे महाराज जो बोलते हैं मुझे सुनाई पड़ रहा था। And he said the essence, the beginning, the foundation of spiritual understanding तो जैसे बात कहा कि जो शुरुआत आध्यात्मिक समझ का शुरुआत उसका बुनियाद क्या है, the foundational essential beginning principle. तो ये जो फाउंडेशन है, Foundation, beginning, essential principle. Teaching. जो सार वस्तु है शिक्षाओं का वो क्या है? Is that we are not this body. जैसा मैंने कहा कि हम ये शरीर नहीं है। And one of these large ladies turned to the other lady and said, "That's a relief." It's true. जो और बॉडी थी कहा कि ये तो अच्छी बात है। So just to get this relief, we're not old or young, we're not fat, we're not thin, we're not handsome or ugly. This has nothing to do with us. We are the pure spirit soul. Brahmabhuta prasanatma natsojite nakanchite tushyanti cha ramanti cha. That's Nitai Sarup Krishna Das. तो ये जो मैं ये शरीर में आता हूँ, ये ज्ञान इतना अच्छा है कि जिससे हमारा सारे समस्या जो है वो समाधान होता है, क्योंकि ना बुढ़ा हूँ, ना मरता हूँ, ना ये जो शरीर दुबला हूँ, पतला हूँ, ये सब चीजें से झंझट से मुक्त हो जाएंगे। So we should understand the great gift, the freedom, the relief, the happiness we have received from Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो हमको ये जो महान उपहार, महान जो दिव्य आनंद और ये जो दुखों से मुक्ति जो हमको प्राप्त हुआ है जितने महापुरुष थे, हमको यह अनुभव करना चाहिए। And just as I said in the beginning, when we said, "Did you understand? So what are you going to do?" तो शुरुआत में हमने कहा था कि ये सुनने के बाद आप क्या करने वाले हो? If you receive a gift, you have to reciprocate. You have to give something back. अगर आपने कुछ उपहार प्राप्त किए हैं तो उसके लिए आपको कुछ वापस देना होगा। And what does Krishna like the most for us to give back? कृष्ण क्या चाहते हैं हम उनका जो उपहार के बदले में? Anyone know? What does Krishna say at the end of Bhagavad Gita? What is the best way to please him? भगवान क्या कहते हैं? सबसे अच्छा क्या उनको पसंद करने के लिए? What do they say? Very good. Someone who explains this secret to others, there is never anyone more dear to me than that person. So to deliver, we've received mercy, and if you give that mercy to others, that is the best way to please Krishna. तो हमने कृपा जो प्राप्त किया है, वही कृपा को और दूसरों को देंगे, वो सबसे अच्छा माध्यम है कृष्ण को पसंद करने का। भगवान कहते हैं जो इस संवाद को दूसरों को सुनाता है, उससे बढ़कर मुझे और कोई अच्छा पसंद नहीं कर सकता है। So we should take the opportunity of this holy Gaura Purnima and pray to Krishna, "Please let me preach for you, let me serve your mission." तो आज गौर दिन में सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि आप हमको जो कृपा प्राप्त हुआ है उन सबको प्रचार करेंगे, उसको बांटेंगे करके संकल्प लेना चाहिए। And the essence of that is if we distribute books. उन सबका ये प्रचार का पूरा सार क्या है? हम ग्रंथों का वितरण करेंगे। How many of you have a set of the Sri Chaitanya Charitamritas in your house? Raise your hand if you have a set of Chaitanya Charitamritas. लोगों के घर में चैतन्य चरितामृत करते हैं, आप बताइए। So not so many, not even 50%. बहुत सारे लोगों के पास तो है। A devotee wanted to open a booth on the campus, University of California, Berkeley, selling Bengali sweets. तो एक बार जो कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटी में एक थोड़ा दुकान खोला था जहाँ मिठाई को बांटे। Prabhupada said the best Bengali sweet is Chaitanya Charitamrita. प्रभुपाद ने कहा कि सबसे अच्छा बेंगाली स्वीट है चैतन्य चरितामृत। So please
Don't just listen, Jai Jai, nice katha, when's prashada. तो ऐसा नहीं कि खाली सुन के जय जय अच्छा पता हुआ हाँ प्रसाद कहाँ है ऐसा कुछ बोलेगा. Please buy a set of Chaitanya Charitamritas. If you can't afford a full set, you buy Teachings of Lord Chaitanya. But you take home a book today and read it. This is the best investment you can possibly make. तो अगर आप ये पूरा सिस्टम पूरा सेट आप लेके जाइएगा से और बहुत पूर्णिमा मतलब से आपको भगवान का प्राप्त करना चाहते हैं तो आपने सुना तो कुछ कीजिए चाहे वो चेतन चेतन पूरा सेट लीजिए गंदे की पड़ी है अगर वो पूरा नहीं खरीद सकते तो कम से कम किसी तो चेतन या चेतन शिक्षा करके पूरा दर्ज है उसको तो लेके जाइए कम से कम पढ़ना शुरू कीजिए. And if you have a set of Chaitanya Charitamritas already, buy a set and give it to your friend. और आपके पास पहले से चेतन चेतन पूरा सेट है और एक खरीदिए और आप इसे को दीजिए. Okay, we'll end there. Thank you for sitting so patiently. Hare Krishna. Hare Krishna. I'm just thinking they've been sitting for a long time. Did I shut this off? Hare Krishna. It's on? Well, we're fasting. And I have to go from here. I don't have to. I get to. It's my good fortune. I go from here to Chaupati, so I can't stay too much longer. But does anybody have a question? Don't be shy. I'm vegetarian. I don't bite. I bark, but I don't bite. Yeah. Do we have a second mic? No. Oh, but then you need for translating. Acha. But then Acha. Yeah. The qualification is yours. Like gold from an unclean place, nectar from a stalk of poison, and the ability to take a good lesson even from a fool like me. So thank you. Go ahead. Say again? Okay. We tend to be two-dimensional. महाराज ने बड़ा नाम उत्तर दिया कि ये गुण मेरा नहीं है आपका है क्योंकि विद्वान व्यक्ति जो है वो नाले से भी मणियों को निकालता है वैसे ही मूर्ख में से भी आप ज्ञान को स्वीकार कर रहे हो ये आपकी महत्ता है. बालन मोदी का प्रश्न ये है कि अंतरंग कारण अंतर के कारण बहिर्मुख कारण जितना और प्राकृतिक पूछे तो दोनों में हमारे लिए कौन सा महत्वपूर्ण है इस स्तर में. तो महाराज ने सोचा का प्रारंभ करते हुए कहा कि हमारा बुद्धि जो है हमेशा दुकोणीय रहता है. We tend to live in the world of either or. तो हमेशा इस दुनिया में जीते हैं ये या वो इस दो चीजों में निर्णय लेने की दुनिया में रहते हैं. But I heard it's one of those wonderful, very deep, actually it's a very deep sutra by Srila Prabhupada. तो इसमें एक बहुत गहरा सूत्र है जो श्रील प्रभुपाद ने हमको दिया है. Prabhupada says a symptom of intelligence is the ability to balance opposing points within the mind. I'm going to say that again. The symptom of intelligence is the ability to balance opposing points within the mind. तो बुद्धि का लक्षण ये है कि परस्पर विरोधात्मक भावना जो मन में होता है उसका समन्वय करना ये बुद्धि का लक्षण है. So both are true. It's not one or the other. Both are true and should be balanced within the mind. तो इसमें दोनों बातें हैं बहिरंगिक और अंतरंगिक ये जो दोनों कारण जो है दोनों सत्य है और इन दोनों के बीच में समन्वय करना आना चाहिए. But as a specific answer to your question, Sariputta Prabhu, you know Sariputta from Bhaktivedanta Institute? Double PhD in statistics and theoretical physics. Tenured professor at Cornell University at 28 years old.
I mean, the man was a genius. He was brilliant, and he surrendered everything to Prabhupada. I don't know how to translate. प्रभु जो है वो डबल PhD हैं, क्या आप उनको जानते हो? जो 28 साल की उम्र में ही वो बड़ा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, ये इतना बुद्धिमान थे, प्रभुपाद को पूर्ण शरणागत हो गए थे. So Saraputra Prabhu told me that Prabhupada told him that our worship of Radha and Krishna, that is our internal affair. But defeating these illusions of the materialistic worldview, that is our external business. So we're worshipping Radha and Krishna. I'm sorry. प्रभुपाद जी ने सदाशिव प्रभु को कहा था, वही चीज सदाशिव प्रभु मुझे कहे थे कि राधा कृष्ण का उपासना करना हमारा अंदरूनी कार्य है, लेकिन ये जो भौतिक जगत के जो अज्ञान है उसको खंडन करना ये हमारा बहिरंगिक कार्य है. But they are so brainwashed with this materialistic worldview that we have to smash that first, or they will not be able to, the ordinary person will not be able to have faith in Radha and Krishna. So we have to remove the illusion first, then they can accept, then they'll hear the message of Chaitanya Mahaprabhu, Radha Krishna. जैसे कि हमारा ये जो भौतिक जगत के जो अज्ञान है, तो उनकी जो दुनिया के दृष्टिकोण है, जो ज्ञान भरा हुआ है, जब तक हम उसका खंडन नहीं करेंगे और ये अज्ञान का ये जो घेरा है उसको तब तक हटाएंगे नहीं, तब तक राधा कृष्ण में विश्वास नहीं और उसको पूजा नहीं करेंगे. One man was talking to Prabhupada, and he kept talking about evolution, all about how we evolved from, evolution. तो प्रभुपाद जी के साथ में एक व्यक्ति करने लगा, बातचीत करने लगा. मैंने कहा ये जो एक विकास है, जानवर से किस प्रकार बंदर से आदमी आया है, एवोल्यूशन के विषय में वो बात कर रहे थे. Prabhupada said, "What evolution? You're still monkeys." प्रभुपाद जी कहा कि बंदर से मनुष्य कहाँ है आप? अभी भी बंदर ही हो गए. I mean, as far as their personal habits and behaviors, they're living like monkeys, that's all. And then Prabhupada said, your ancestors may be monkeys. He said, but my ancestors are the great sages of Vedic India. You know what Prabhupada said the missing link is? क्या का मालूम है वो जो एक जानवर दूसरे जानवर के बीच में जो खोया हुआ जो संबंध है इस विषय में? He said the missing link is my foot in your face. Jai Prabhupada. प्रभुपाद जी का ये जो कमी है इस समाज में क्या है? मेरा पैर और तुम्हारा मुंह. So a doctor, he has to, what is the first step for cure of a disease? What do you, if you're going to cure a disease, what do you have to have? एक डॉक्टर जो है उनका सबसे बड़ा कार्य क्या होता है? अगर कोई बीमारी उसको दूर करने के लिए सबसे बड़ा डॉक्टर क्या कार्य करता है? This man wants to say. Symptoms okay. Good. You have to have an accurate diagnosis. You have to have accurate diagnosis, otherwise how can you cure the disease? सबसे पहला जो बीमारी का लक्षण है उसके द्वारा क्या बीमारी क्यों हुआ तो मूल कारण वो पहचानना डॉक्टर का कार्य होता है. So the compassionate Vaishnavas, Trinadapi Sunichena, devotees are tolerant, more tolerant than the tree. But there's one thing that devotees cannot tolerate. तो जो भक्त जो हैं वो बहुत बहुत सहनशील होते हैं, बहुत नम्र होते हैं. ये एक चीज से भी सहन नहीं कर सकते. You know what that one thing devotees can't tolerate, and it's not no prashadam. Even that we can tolerate, but we can fast for a little while. As long as moonrise is coming, we're all right, you know. ठीक है, वो प्रसाद की बात ही चल रही है. कौन सा चीज है जो भक्त परिधान नहीं कर सकता है? They cannot tolerate the cries of the. This is a line from Bhagavatam. It's another one of those powerful, sweet sutras by Srila Prabhupada. जो ये जो एक चीज जो भक्त सहन नहीं कर सकता है, वो भागवतम से बता रहा हूँ. वो एक ऐसा सूत्र है जो बहुत मधुर सूत्रों में से एक सूत्र है. The Vaishnavas cannot tolerate
the cries of the conditioned souls being crushed by the material nature. तो एक वैष्णव जो है जो भौतिक जगत की माया के द्वारा इससे जो भौतिक लोगों का जो आंसू है जो रोना है उसको कभी सहन नहीं करता. So out of deep compassion, we're not, in Radhakund and Radhe, Radhe. That is not our business. तो ऐसा नहीं कि हम लोग रात में जाकर राधे राधे करके बोल रहे हैं, वो नहीं हमारा कार्य नहीं है. Our business, out of deep compassion for the conditioned souls, is to understand their psychology, how to break that psychology, and get them to take Radha Krishna Bhav. तो हमारा कार्य है लोगों की मानसिकता को तोड़ के उनके अंदर कृष्ण राधा कृष्ण भाव को प्रदान करना, ये हमारा कार्य है. That is a genuine servant of Krishna. ये कृष्ण का वास्तविक सेवक है. We have another question. If I didn't scare you off by that. Any other question? Don't be shy. You'll still get prasadam, don't worry. No? Okay, then maybe we're done. Thank you, Hare Krishna. All glory to Srila Prabhupada. मैं चाहता हूँ कि महाराज ने सबको प्रेरणा दिया कि आज सबको चैतन्य चेतनामृत देना चाहिए. कम से कम चैतन्य शिक्षामृत तो ले लीजिएगा. और एक और कॉपी चैतन्य चेतनामृत बोर्ड संगीत Buy a book. What is the use of all my coffee? Buy a book. मेरे इरादे का सबको बताया कि आप फायदा है कि आप एक किताब खरीदिए कम से कम चैतन्य शिक्षामृत चैतन्य चेतनामृत. बहुत बहुत धन्यवाद. करेंगे महाराज को.